मुख्यमंत्री बसिक सचिव सिंह बारंबार कर कमिशनर डायरेक्टर फायर सर्विसेस जिलापाल संगे वीडियो पहुंची आप बहुत किंतु चेहरा चापयुक्त था आज चेहरा चाप धन्यवाद सरकार ये जो चेहरा माने जो काम कले 180 टीम काम करते काम तुलना ना देखो कही आज सका कल राति सारा मुझे आज सका 7 जो तथ्य मुझे संग्रह करुँच बर्तमान सुधा रास्ता मोटामोटी रास्ता काम छाड़े मोटामोटी रास्ता क्लीयर करदे जो मैंने फरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारी अच्छी जो मैंने फायर ब्रिगेड अधिकारी अच्छी ओडा टीम अच्छी एनडीआरएफ टीम अच्छी और बहुत जगह सामाजिक संगठन मैंने काम करने आज 4 घंटा भितर बात्या दाना यू लैंडफॉल फॉल कर चली जावा 4 घंटा भितर रोड क्लीयरेंस हो गलानी विभाग को धन्यवाद देवा कथा से निरंतर आम संगे संपर्क थे बैठक आउे परामर्श ग्रहण करते टेलीकम्युनिकेशन कम्प्लेन आदौ आसला नहीं पावर बैकअप पावर देवाई पावर को ठीक ठाक रखा शक्ति विभाग जो भूमिका से भूमिकार तुलना नहीं बहुत जगह डिस्ट्रप्शन ही नहीं कि किसी जगह तार छिनी फल डिस्ट्रप्शन होती आज शक्ति विभाग आमको प्रतिश्रुति देती सूर्य अस्त हवा पूर्व आलोक आसी सारी सब जगह कौन जगह आउ पावर शून्य आलोक शून्य होकर रही नहीं कृषि विभाग को धन्यवाद देवा कथा हेल्थ डिपार्टमेंट काम चमत्कार निखुण भाव जो मदद मैंने एक्सपेक्टेड मदद थी समस्त को आम गाँव हॉस्पिटल को पीएससी को सीएससी को स्थानांतरित कर सफल हेलु आज रिपोर्ट मत मिलना काली राति पर्यंत 1600 माँ मैंने प्रसव कले से प्रसव सांगे सांगे यहाँ तथ्य आपको देवाक चाहे 13 जन जाँला जन्म होती जो मैंने कि 1300 शिशु जो मैंने जन्म हेले से आगामी ओडिशार निर्माण नुआ विधान होकर बाहर लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट टार्गेट प्रथम बेसी पुणी टार्गेट कम है 6 लाख अधिक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ नेचुरल क्लेमिटी अक्रॉस द कंट्री सारा भारत वर्ष बड़ और सफलतार सहित जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिला जे समस्त रंधा खाद्य दिया गाँ भाँ अभियोग आसी प्रकृति सन्देह नहीं किंतु सामग्रिक भाव में रंधा खाद्य और रंधा खाद्य कौन कौन आइटम होती सेंटर में तार स्वाद केमी अच्छी से रिलीफ सेंटर में जो मैंने रोती आसिक से मोबाइल लोक कथा कर सुस्वादु खाद्य लोके फेरवाटा आरंभ कले किसी लोक फेरीगले आपंकर माध्यम मुझे पूरा जिला प्रशासन को खोजापी चाहे जे एवं सब जगह खालुआ जगह पानी अपसारित ही नहीं जो मैंने रिलीफ सेंटर में रही चाहिए से मध्याह्न भोजन जदि आवश्यकता पड़े राति भोजन व्यवस्था है जी फेरवाई चाहिए से जो रिलीफ सेंटर अधिकारी सूचित कर फेरी पार ये क्रम श्रावणी दीदीर जो चमत्कारिता आम देखलु 7 जन को खांदे बोहिक रिलीफ सेंटर में पहुँचा यहाँ हूँ ओडियात्व ओडिया अस्मिता और ओडिया भावनार प्रतिफलन यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता मैंने सामिल हेले निर्वाचित प्रतिनिधि मैंने सामिल हेले सामाजिक संगठन मैंने सामिल हेले आशा दीदी आंगनबाड़ी दीदी ठार आरंभ कर मुख्यमंत्री पर्यंत मुझे खाली राति सारा विभिन्न कलेक्टर मान सागे भी कथी पीडीओ मान सागे कथी फिल्ड स्टाफ मान सागे भी कथी मुझे आज आनंदित जे केते सेवा कर पार्लु जी महत्वपूर्ण सेवा करने निजक केते प्रस्तुत करूँ ताठू महत्वपूर्ण रात्रि सारा ओडिशा प्रशासन ये प्रभावित जिले में सजग रही है सफलतार सहित लोक निरापद स्थान को नेला गो संपद को स्थानांतरित कर एथर ओडिशा सरकार कले गो खाद्य जोगाइबार आज गो खाद्य पाखे गच्छित अच्छी बढ़ीगला सब खर्च हो पारा नहीं रेड क्रॉस जो भलेंटियर्स मैंने से भूमिका अतुलनीय और आउ गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी को उल्लेख करने चाहिए गणमाध्यम जो मैंने प्रभावित जगह काम करते हैं विपद संकुल काम करते वर्षा भिजिक कैमेरा सुरक्षित रखिक जो भाव में तथ्य से परिवेशन कले से जिते प्रशंसा कले कम हम से जो फीडबैक से फीडबैक आमको आहरी साहाय्य करने प्रेरित कराला शेष ये दाना हूँ पार्सी वार्ड जो जो समय सारा पृथ्वी में बात्या सब हुए ये बात्यार ना दिया जाए दाना स्वाभाविक भाव में आमको लगे ओडिया शब्द और ओडिया शब्द को निहाई दाना हूँ पार्सी शब्द ये पार्सी शब्दर अर्थ है दया और संवेदनशीलतार अर्थ मत लगे इथर बात्या ओडिशा प्रति संवेदनशील था मोर गोटे विश्वास था कल राति 3टा बेले भी आपको कहती आज आपको कहूँ चाहे जे मोर विश्वास जे जे कहीं भी कौन काम निष्ठार सहित प्रतिबद्धतार सहित काम जिते कठिन थे महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करेंगे एथर मोर मन है जे आम समस्ते टीम वर्क केवल ओडिशा देखी नी अतीत सफलता आम पाई सन्देह नहीं अतीत बाबद चर्चा करार आवश्यकता नहीं एथर ओडिशार ब्यूरोक्रेसी और ओडिशार पॉलिटिकल लीडरशिप भीतर जो पार्टनरशिप लोक को सेवा जोगे देवार ये गोटे निरा अनुभव मो समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत शुभकामना जो मैंने रिलीफ सेंटर अच्छे आपको भी समस्त को धन्यवाद आप सरकार कथा मानिले सरकार को सहयोग कले ये जो बात्या प्रत्येक घंटे तार चरित्र बदलूला ये बात्या प्रत्येक घंटे तार दिग बदलूला तार गति बदलूला और राति सारा मुझे सैटेलाइट पिक्चर सब देखुली और जोटा आम पूर्व अनुमान लगे मूलतः धामरारे लैंडफॉल कर बालेश्वर और केन्द्रापड़ा को बेसी प्रभावित कर परवर्ती अवस्था है बालेश्वर में बेसी प्रभाव होनी वर्षा बेसी हो किंतु भद्रक और केन्द्रापड़ा प्रभावित हो पूरी देखिए आकलन करा पूरी देखिए यहाँ ओडिशार सीमा छाड़ कि पूरी दिग परिवर्तन कला पूरी ढेंकानाल अनुगुला मुहाँ और शेष खबर होची जे ओडिशार लैंडफॉल प्रक्रिया समाप्त होगा ये बात्या आपंकर धामरा और केन्द्रापड़ा देखिए मयूरभंज देखिए
केन्दुझर मोटामोटी तार जो प्रभाव प्रभाव शून्य हो गलानी आ ना गति अच्छी ना तार कौन दिग अच्छी ये सामग्रिक प्रकरण में जो आपने कहते ओडिशा सरकार प्रथम सफलता बोलिक प्रथम दायित्व थी देखो प्रत्येक दायित्व छोट हो कि बड़ हो दायित्व दायित्व बड़ न था छोट न था कम कौन छोट न था बड़ न था कि जो कम मनीष लगे जो धन जीवन रक्षा करने प्रश्न आसे से उत्तरदायित्व बेसी थाए और चाप बेसी थाए विगत 5 दिन धरी आम चाप युक्त थिलु एवं सरकारी अधिकारी एत माराथन मीटिंग और गोटे निष्पत्ति कलापर आहरी कौन किसी आवश्यकता अच्छी से जो परामर्श और राजस्व विभाग विभिन्न अन्य विभाग जो विभाग मैंने परिस्थिति में साहय करते निरंतर बैठक मत लगुच एभलिया घटना एवं एभलिया प्रस्तुति और ये प्रस्तुति को कार्यान्वयन यहाँ एक विरल अनुभव मो जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में आम ये लड़ई लड़िलु बहुत बहुत धन्यवाद मोर मंत्रिमंडल सहयोगी मैंने विभिन्न जगार निजक पोजिशनिंग करेंगे और विभिन्न जिलार दायित्व ने विभिन्न जिलार रिलीफ सेंटर को गले और छोट बड़ त्रुटि विच्युति प्रशासन माध्यम समाधान कले से बहुत बहुत धन्यवाद ओडिशार जो माननीय सांसद और मूलतः विधायक मैंने दलमत निर्विशेष विधायक मैंने सब जगह सागर राति सारा कथबार्ता होती मोटामोटी सब प्रभावित अंचल विधायक मैंने काम रही लोक सेवा रही और राति सारा अनिद्रा रही और तल स्तर में पंचायत आरंभ कर जिला परिषद पर्यटन जनप्रतिनिधि मैंने विभिन्न जगह हाथ बढ़े सामाजिक संगठन मैंने हाथ बढ़े गणमाध्यम गोटे दिग को मो प्रशंसा कर रही पारना से क्राइसिस समय टी संवेदनशील हवा और संवेदनशील हवा सागे सागे पॉजिटिव हवा गुड़िए पॉजिटिव सजेशन आपने विगत 5 दिन भितर देते और आपंकर सजेशन आम कार्यकारी करने चेष्टा कर सफलता पाइछु जो पदस्थ ऑफिसर मैंने अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुझे एसआरसी को स्वतंत्र धन्यवाद देवाई चाहे टोटाल प्रकरण से केन्द्रबिंदु है एसआरसी जे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और विभाग अन्य विभाग चीफ सेक्रेटरी भूमिका बहुत सकारात्मक थिला एवं से ये माराथन प्रक्रिया भितर भूमिका बहुत प्रशंसनीय भूमिका थिला डेवलपमेंट कमिशनर से विलंबित रात्रि पर्यंत ये थे से प्रत्येक बैठक में मूलतः जलसेचन विभाग तार दायित्व सबुठ कठिन था पानी केते छाड़ू पानी केते रखिबू पानी केते आसीबो और पानी केते पशिबो और रबी फसल पानी रखिबार आवश्यकता अच्छी संभाव्य बन्या पानी छाड़बार व्यवस्था अच्छी से दिगरे डेवलपमेंट कमिशनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माने समस्ते और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माने धन्यवाद देवाई चाहे आउ सागे सागे जिते प्रभावित जिला और संभाव्य प्रभावित जिलार जिलापाल मैंने थे युव जिलापाल मैंने अनुभव कम था अनुभव को बढ़िया आम से अवस्थापित करूँ पुणा एक्स कलेक्टर मानक से दुईर भितर जो तालमेल रहा और ग्रासरूट जो काम कले से समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ओडिशार गोटे नुआ जुग आरंभ है ये जो टीम वर्किंग को आगामी दिन में आहरी स्ट्रेंथेन करूँ आसंता काली जब पाग टी अनुमति दिए आम प्रिलिमिनारी असेसमेंट करने क्षयक्षति के फसल के नष्ट है तार सागे सागे केते घर आंशिक कि संपूर्ण भाव नष्ट है तार एरियल सर्वेक्षण करने प्रयास चली परदिन ठार फील्ड केन्द्र सरकार को आज चीफ सेक्रेटरी साथ कथा केन्द्र सरकार को प्राथमिक आकलन टी है प्राथमिक आकलन कर क्षयक्षतिर रिपोर्ट केन्द्र को पठेबे और केन्द्र जो साहय देला मो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री इन धन्यवाद जनाई चाहे माननीय प्रधानमंत्री आमको मिला माननीय गृहमंत्री श्रीयुक्त अमित शाह आम जहाँ साहय सहयोग मागिलु से पाइलु भातिंडारू शेष मुहूर्त में एनडीआरएफ को उड़ाजाज आनिक भुवनेश्वर पहुंचागला तेणु सामग्रिक भाव में बर्तमान मूल दायित्व है जे लोके फेरिबा पूर्व आज आम निर्देश जिलापाल मानक जे जो जगह गाँव को फेरबे गाँव पानी गोलिया हो गाँव पानी बहुत जगह विषाक्त हो तेणु पीवा पानी जो डिसइनफेक्शन गाँव को करवा कथा से बहुत जगह आरंभ होगा बहुत जगह कुआ पोखरी को ब्लीचिंग और अन्य केमिकल देखिए ठीक ठाक करवा कथा क्लोरीन देखिए ठीक ठाक करवा कथा से आरंभ होगा और पशु मानक ये बन्या समय से रोग हो जाए आम भैक्सीनेशन करने पड़े ना से विपद पड़ जाती तेणु भैक्सीनेशन प्रक्रिया आरंभ हो एसेसमेंट कलापर आपको कहना चाहिए और माध्यम जो क्षतिग्रस्त है जो मान फसल नष्ट होती से फसल नष्टर क्षयक्षतिर आकलन आम आसंता 7 दिन भितर समाप्त करूँ और जो घर आंशिक कि संपूर्ण भाव नष्ट होती तार आकलन करूँ 7 दिन भितर आम प्रयास करूँ से घर ठीक ठाक करने जो फसल नष्ट होती तार क्षतिपूर्ण देवाई और तार सागे सागे जो घर संपूर्ण भाव नष्ट होती आज मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी सागर कथबार्ता होमें सेटा कमी आम पक्का घर देपारू जमी आपको केवल बन्या बात आसिले खपर घर कि कुड़िया घर नष्ट न हो क्षतिग्रस्त न हो क्षतिग्रस्त बारंबार क्षतिग्रस्त होता लोक आगामी दिन में पक्का घर देवाई आम प्रयास करूँ पुलिस आप समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद नहीं आकलन आसबार फील्ड को पहुँचे आम बर्तमान पर्यटन रिलीफ सेंटर अच्छु जो रिलीफ सेंटर लोक फेरवा आरंभ कर सुरक्षा से पीवा पानी व्यवस्था और आवश्यक पड़े घरे चूड़ा गुड़ पहुँचार व्यवस्था चली लोक मैंने निरापद थे फेरी सारा रिलीफ सेंटर में राजस्व विभाग अधिकारी काम समाप्त होगा फील्ड को एसेसमेंट काम आरंभ जो टीम ये काम को आगे बढ़े और संपूर्ण ये प्रकरण टीम वर्क कले से नहीं आम पूरा क्षतिग्रस्त एरिया एरियल सर्वे करने चिंता करूँ पाग अनुमति दिए आसंता काली पूरा क्षयक्षति होता अंचल सामग्रिक भाव में प्राथमिक एसेसमेंट कर लोके फेरला राजस्व विभाग और अन्य विभाग अधिकारी मैंने लोक पाखे पहुँची क्षेत्र को पहुँची तार क्षयक्षति आकलन आरंभ करेंगे थैंक यू आसी जिलापाल मैंने जिलापाल मान सहयोगी अधिकारी मैंने लोकर निरापत्ता लोकर सुरक्षा से काम व्यस्त अच्छे लोक कमी भोजन करेंगे चिकित्सा करेंगे लोके जो घर जो फेरबे घर को फेरबे और रिलीफ सेंटर छाड़े रिलीफ सेंटर दायित्व अधिकारी मैंने गाँव को जाकर एसेसमेंट आरंभ करेंगे भद्रक भद्रक सब बेसी प्रभावित जिला है भद्रक भद्रक पर आपंकर केन्द्रापड़ा व्यापक भाव प्रभावित होती तलक आप बालेश्वर तलक मयूरभंज और एपटे पुरीर किसी जगह व्यापक क्षति होती कटक गोटे निर्दिष्ट अंचल क्षति होती केन्दुझर क्षति होती बहुत जगह कम क्षति होती किंतु मूल जो लैंडफॉल कला बात्या भद्रक केन्द्रापड़ा और किसी कारणस जगतसिंहपुर ये जिला मैंने व्यापक भाव में क्षतिग्रस्त होती ठीक अच्छे थैंक यू मुझे अच्छी
प्रत्येक मुहूर्त रिव्यू चलती है केते जगह रास्ता क्लियर हलानी मते एबे खबर आसिला जे पूरा वर्तमान मूल रास्ता आदो डेमेज नहीं कि गछ पड़ी नहीं गाँ को जो रास्ता माने थिला सेटा वास्ट डिपार्टमेंट पीआर डिपार्टमेंट एवं आरडी डिपार्टमेंट ए माने सब से रास्ता क्लियर कर सारिन बहुत जगह पावर रेस्टोरेशन काम चलती अधार अधिक जोटा आलुआ पड़ी थिला रेस्टोरेशन साइलानी आ हमको शक्ति सचिव प्रतिश्रुति देछंती जे सूर्य अस्त हवा पूर्व पूरा पावर फेलियर हेतिबार जगह सब रिपेयरिंग काम समाप्त हेबा आलोक आसीबो बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज। मीटिंग है सर। आप जाओ जाओ, फोटो जरूर खींचना। If you allow us, we'd love to. Chai, chai, garma garam chai for everyone. Whiskey on the rocks, right? No, totally. Let's go. That's Gaurav for you. यार परसों इस गधे का फेयरवेल है, मैं सबको ग्रुप पे मैसेज डाल देती हूँ। कैसे बुलाएगी सबको? रोहित हमेशा के लिए लंदन जा रहा है, पता नहीं यार फिर कब मिलेंगे। तो जो भी करते हैं दिल से करते हैं, है ना? रास्ते जब साथ है डरने की क्या बात है, रोशनी से भरी ये सांस है, मस्ती है और मजाक है, खबरू जज्बात है, बेहतरीन सा ये एहसास है, लेके प्यारे 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 सारे सारे लम्हात में चला खुद से ही हूँ करने मुलाकात में। जिंदगी तू खास है, तेरे जैसी कोई नहीं है, जिंदगी तू खास है। Just give me a second, please. Saturday night meeting. Saturday, I can't. I need you, bro. Saturday. Let's go. Perfect. Meet the new one. No. Yeah? Let's go. Let's go. और भाई लंदन फुटबॉल के 2 VIP टिकट्स बनते हैं। VIP tickets. हलवा है क्या? Guys, so as we all know कि गौरव हमारे ऑफिस का चैंपियन है ऑफ प्रेजेंटेशंस, तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है गौरव के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाने की, जिसका नाम है चल बे। तुझे मिस नहीं करेंगे। So this is Gaurav in his emo boy phase. Ultra cool phase. Gaurav in his Lover boy phase. Oh, come on, man. Oh, this is from a graduation. Remember this day? सबसे बड़ी डील क्रैक की थी हमने उस दिन। मतलब इतना अपबीट, डेडिकेटेड, पैशनेट बंदा मतलब किसको चाहिए? हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तू जा यार, तू जा। अरे नहीं नहीं, MBA फाइनल्स, पूरी रात नहीं सोए थे हम। It was right after my dad had
What does this guy do? अपनी पढ़ाई छोड़ के he helped me. ऐसे फ्रेंड को कौन मिस करेगा यार? And now, finally chasing your dream. I'm so proud of you. Yeah. All right. Enough crying now. Yeah. Yeah, I want to party. Yeah. Yeah? Let's go. 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 मैंने बोला था ना सब रोएंगे रो दिए जिंदगी तू खास है तेरे जैसी कोई नहीं है जिंदगी तू खास है जिंदगी तू खास When you want to show how much you care, Canva, दिल से डिजाइन तक. Thank you, External Affairs Minister Shri Jaishankar ji, for sparing time for us. Let's start with equations, how it works globally. We all know that current global order is being challenged majorly by various forces. How do we see ourselves, our West, which itself is now in a very difficult situation vis-a-vis India? First of all, let me say what a great pleasure it is to be with you and with at this NDTV platform. So, let's look at your theme first, India's century. If one were to predict ahead, and there are people who have done this, I think I saw some time ago a Goldman Sachs study which said that by 2075, I think it said we'd be 52.5 trillion economy, we'd be the second largest probably at that point of world. But I think a much nearer short-term prediction is that by 2030, we would probably be the third largest economy. So that's one way of measuring it. But I think there are other ways which may be more effective. If you look today at the big debates of technology debate, AI debate, semiconductor debate, I think the importance of Indian talent and skill is growing really almost day by day. In fact, when I go, especially when I go to Europe, to some extent to North America as well, there's a lot of interest really in how can we get this smooth movement of talent and skills out of India, because the fact is that within certain demographics, we are actually disproportionately large. I would also say if we look beyond numbers, beyond growth rates, beyond markets, supply chains, there's also one very I would say intangible quality, and that is leadership and attitude. That who will step forward? That if you have today a war going on in Ukraine, who is prepared to step forward? If you have a natural disaster in the Indian Ocean, who is prepared to step forward? So sometimes there may be countries who have capabilities, but they don't have the
desire or the appetite or the mindset to do that anymore. So I think if you add all of this, you are somewhere in that zone which you are looking at. Since US and Canada are main players in the western part of the world, US we will deal a little later, but what about Canada situation? How are we dealing with it? Now, have we contained Yeah, just it? imagine, some time ago you would have said, Canada we will deal with later, let's talk about the US. So now, for some inexplicable reason, you are saying US बाद में बात करेंगे, चलो Canada की बात करते हैं. US is not problematic for us. No, that's true, I agree. I agree. Yeah. US is not problematic for us. But Canada is, even though it's a lightweight. Unfortunately, I agree there also. But such a wonderful people-to-people relationship, and now it is a struggling economy and whatever. But why Trudeau will be doing this? I think, that's a question you need to have Trudeau here, not Jaishankar, to answer. I can only speculate. Look, to some extent, I think there is a general Western issue, and to some extent, a very specific Canada issue. I think the Western issue has been, after all, let's be frank, the world order after 1945 was heavily Western. I mean, it was before 45 also in an imperial colonial sense. And after 1990s, it was again very, very Western. So what has happened, you can say, in the last 20, 25 years, is that there is what you can call a rebalancing, a multipolarity. Many non-Western countries have a bigger share, a bigger contribution, a bigger role, if you would, and a bigger influence which will naturally come. So the equations, in a way, between the West and the non-West, I think is changing. And it's not easy to adjust to that. If you've been dominant and you are less dominant, if there was a time when, in the conversation you were looking up and I was looking down, and now the conversation is no longer like that. It takes a little bit of getting used to. So I would say, in a broad way, on multiple subjects, today when the natural diversity of the world has started to express itself, when many more countries, and particularly many more large countries like India or China, have points of view and positions to take, there will be contestations, there will be frictions, there will be arguments. So it won't be so smooth. That's a larger picture. Where Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. You are right. If you look at the people to people, if you look at the business relationship, it's very, very strong. And for a lot of people, it is very difficult to imagine that we could reach the state of relations that we have today. So why has this happened? I would say definitely there is some history, I mean, for the non-Indians in the room, I should remind you that in the 1980s, Indian Air India plane was blown up flying out of Canada, and in many ways that's a kind of a overhang, because it wasn't just an incident, it was a reflection of something which was going on there. But at a time when many people felt that, look, that's all behind us, I think developments in the politics went in a different direction, and we are seeing to some degree the consequences of that. So
again, I give you the first observation that, the broad attitude versus the specific. And I give you 2-3 examples of it. Canada has just, they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say, and we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Oaksmith Style Studio. I am at the Oaksmith Style Studio and this is my guide for wedding season. A royal ivory sherwani and a little bling. Always something that makes a look better. Oaksmith. Beg it higher. और तुषार શું બોલે છે બજાર હર એક્સપાયરી ટ્રાય किया एंड में क्रैश किया आप ही कोई एडवाइस दो ने एक इंटेलिजेंट बैट्समैन हर बॉल पे सिक्स थोड़ी मारता है सही अपॉर्चुनिटी का वेट करता है ये ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है सही टाइम पे सही शॉट मारने का एक्सपायरी देख के ट्रेडिंग मत कर अपॉर्चुनिटी देख के कर सरस लॉजिक Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people,